I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics. Today I will deliver lecture in Atwood's machine in Dynamics Mathematics paper 3rd for the students of BA, BSc 6th Sem 3rd year. Atwood's machine is an invention of science which is used to calculate value of gravitational acceleration g at different places. It consists of a base on the ground to which is fixed a vertical pillar. This is the Atwood's machine. वर्टिकल पिलर से ग्राउंड पे फिक्स कर रखी होती है. इट कंसिस्ट्स ऑफ ए बेस ऑन द ग्राउंड टू विच इज फिक्स्ड ए वर्टिकल पिलर. ए स्मूथ पुल्ली इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द पिलर. टॉप ऑफ द पिलर पे एक स्मूथ पुल्ली फिक्स की होती है. एन एक्सटेंसिबल लाइट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग पासिस ओवर द पुल्ली as shown in the adjoining figure. एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पास करते हैं पुल्ली के ऊपर से as shown. Two equal masses equal to capital M are attached to the ends of the string. कैपिटल M के दो मास दोनों साइड में अटैच कर देते हैं. Two equal masses each equal to capital M are attached to the ends of the string. There is a platform P. P एक प्लेटफॉर्म होता है attached to the pillar. Pillar जो vertical pillar है which is vertically above the ring Q. Ring Q होता है Q, उसके vertically above होता है एक प्लेटफॉर्म above ring Q fixed on the pillar. One of the masses rest on the प्लेटफॉर्म P. एक मास वन ऑफ द मासेस एक मास प्लेटफॉर्म P के ऊपर होता है. ठीक है, एक मास है ना, एक तो फ्रीली हैंग होता है, एक मास P के प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है. ए मास स्मॉल m कॉल्ड द राइडर इज एडेड टू मास कैपिटल M. जो प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मास हम स्मॉल m जिसको राइडर कहते हैं ऐड कर देते हैं. एंड द प्लेटफॉर्म P इज मूव्ड इंस्टेंटेनियसली. और क्या करते हैं एंड द प्लेटफॉर्म P जो प्लेटफॉर्म है उसको मूव करते हैं एकदम. एंड द सिस्टम कम्स इनटू मोशन. और सिस्टम क्या मोशन में आ जाता है, उसको हटा देते हैं प्लेटफॉर्म को. इफ़ f विद द एक्सेलरेशन देन f इज़ गिवन बाय वी कैलकुलेटेड कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस कैपिटल M divided by capital M plus small m plus m into g is equal to m divided by 2m plus m small m into g. If v with the velocity of the system, then the mass capital M plus m comes to the ring Q. अगर मान लेते हैं v वेलोसिटी है सिस्टम की, when the mass capital M plus small m comes to the ring Q रिंग में आता है, then b स्क्वायर इक्वल टू 2f इंटू पी क्यू. b स्क्वायर इक्वल टू fs होता है. s क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड पी क्यू, p से q तक डिस्टेंस. v स्क्वायर इक्वल टू 2fs. u तो 2f क्या है m/2m प्लस स्मॉल m. और पी क्यू क्या है g, इतना तो है इंटू पी क्यू. When the mass capital M plus small m passes through the ring से पास करेगा, the rider is got removed. जो राइडर है ना वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली. एंड the masses on both sides are again equal. फिर मास दोनों ही इक्वल हो जाएंगे. एंड the system moves with constant velocity. और सिस्टम क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाएगा v वेलोसिटी से. लेट इट ट्रैवल ए डिस्टेंस x इन टाइम t टाइम में ये x डिस्टेंस ट्रैवल करता है. देन x इक्वल टू vt.
और स्केयरिंग बोथ साइड्स एक्स स्केयर इक्वल टू वी स्केयर टी स्केयर। वी स्केयर हमने निकाल रखा है, तो 2m बटे 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m g इंटू टी क्यूब इंटू टी स्केयर। दिस इज द फार्मूला विच गिव्स द वैल्यू ऑफ g। यहाँ से g की वैल्यू निकाल लो। अब इसके एग्जांपल्स हैं। टू masses of 14 kg and 7 kg respectively are connected by light inextensible string passes over a smooth pulley। स्मूथ पुल्ली के ऊपर पास कर रहे हैं, एक 7 kg का एक 14 kg का है। एंड सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम रेस्ट से शुरू होता है। एंड मूव्स फॉर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड तक मूव करता है। व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स, जब स्ट्रिंग ब्रेक करता है। एंड आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल्स ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन पे छोटा मास जो 7 kg का है कब आएगा ये। लेट m1 14 kg का है, m2 7 kg का है, ठीक। लेट f विद द एक्सेलरेशन, तो f हमें पता है m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी। 14 माइनस 7 बटे 14 जमा 7 इंटू जी, 1 बटे 3 g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट v विद द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर 3 सेकेंड, तो v इक्वल टू u प्लस एफ टी, तो 0 g बटे 3 f क्या है g बटे 3 निकाला है, तो t टाइम 3 सेकेंड है, तो इक्वल टू 3 से 3 कट गया g मीटर पर सेकेंड। तो एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर। u 0 है प्लस हाफ g f की जगह g बटे 3 हो गया, और टी स्क्वेयर टाइम 3 सेकेंड का स्क्वेयर 3g/2 मीटर्स, इतना डिस्टेंस हो गया। When the string breaks, the smaller mass of 7 kg moves freely under gravity with an acceleration g meter per second square in the downward direction and has to move 3g/2 meters with an initial velocity of -g meter per second to comes to its initial position if t with the time taken, then (3g/2 equal to -gt प्लस हाफ gt स्क्वेयर। तो g कैंसिल करते हो, टी स्क्वेयर -2t -3 इक्वल टू 0। इधर t इक्वल टू 3 और -1 हो नहीं सकता, रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। वी गेट t इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद है ना, ये इस तरह का होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, 2 स्केल पेन्स ईच ऑफ मास 2 kg आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग over smooth pulley। Show how to divide a mass of 45 kg between the 2 pens so that the heavier pen may descend through a distance of 40 meter in the first 4 seconds। Let f with the acceleration of the system, initial velocity 0 है, distance 40 meter है, time 4 second है। Using s equal to ut plus half f t square, we have 40 equal to u 0 है इंटू 4 प्लस 3/2 1/2 f t 4 सेकेंड 16 इक्वल टू 8f equal to 40, f equal to 5 meter per second square। Let the 45 kg mass be divided into 2 parts, m and 45 minus m kg, where m is greater than 45 minus m, then the masses on 2 sides of the string are m plus 2 and 47 minus m plus m into kg। दो ऐड कर दिए, m plus 2 47 minus m kg, तो therefore 5f equal to m plus 2 minus 47 minus m divided by m plus 2 plus 47 minus m गुणा 9.8, ये फार्मूला है। तो 5 इक्वल टू 2m माइनस 45/49 इंटू 9.8, तो 25 इक्वल टू 2m माइनस 45 इम्प्लाइज 2m इक्वल टू 70, m इक्वल टू 30 kg,
वन पार्ट 35 kg हो गया, अदर पार्ट 45 minus 35 10 kg. Next example, two heavy particles are attached together by a string passing over a pulley. If the string can only support a tension equal to 1/4 of the sum of the weights of its two ends, show that the least acceleration possible is g बटे √2. Let m1 and m2 be the two masses attached to the string m1 greater than m2. तो ठीक है, 2m1 m2 बटे m1 प्लस m2 कंपेयर. Wait. So let m1, two heavy particles are attached together by a string passing over a pulley. If the string can only support a tension equal to 1/4 of the sum of the weights of its two ends, show that the least acceleration possible is g√2 mdu 2012. Let m1 and m2 be the two masses attached to the string m1 greater than m2. तो टेंशन हमारा ये हमें रिजल्ट पता है, 2m1 m2 डिवाइड बटे m1 प्लस m2 इंटू जी, एफ इक्वल टू m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी. टी ये है जी और m1 प्लस m2 बटे 2g. Now m1 plus m2 बटे 2g into 4 m1 m2 m1 plus m2 का होल स्क्वायर into g स्क्वायर. यहाँ से g की वैल्यू f जी स्क्वायर कर दिया, 2g नीचे कर दिया. ठीक. 4m1 m2 बटे m1 प्लस m2 का कुछ डिवाइड किया, कुछ गुणा किया और इसको सिंप्लीफाई करो. फिर m1 प्लस m2 बटे 2g. 4m1 m2 का m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर डिवाइड बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बटे 2g इंटू जी स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बटे 2g जी स्क्वायर माइनस f स्क्वायर. तो बट t इज लेस देन इक्वल टू 1/4 m1 प्लस m2 इंटू जी. Therefore m1 plus m2 बटे 2g g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4 m1 प्लस m2 इंटू जी. तो g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हाफ g स्क्वायर, f स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ g स्क्वायर implies f greater than equal to 1/√2 g. Hence the least possible acceleration is 1/√2 into g. Masses p and q in an Atwood's machine are allowed to move from rest to any distance x if p greater than q. Show that mass which must suddenly be removed from p at the end of distance x, so that motion in some sense may continue a further distance nx, is n plus 1 p square minus q square n plus 1 into p plus n minus 1 into q. Let f be the acceleration when the masses are p and q. p q मास है तो f इक्वल टू p माइनस q बटे p प्लस q इंटू जी.
if v with the velocity when distance x has been described by the acceleration f, and v square equal to 0 plus 2fx equal to 2fx. Let m be the mass removed from mass p. Now the masses are p minus m, q greater than p minus m. If f1 be the retardation, then f1 equal to q minus p minus m by q plus p into g. तो माइनस कॉमन ले लो, p माइनस क्यू प्लस m, p प्लस q माइनस m into g. सेकेंड, तो इस तरह से विद दिस रिटार्डेशन द सिस्टम डिस्क्राइब्स ए डिस्टेंस nx बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू fs, 0 minus v square equal to 2 into minus f1 into nx, or v square equal to 2f1 into nx. Using second we get 2fx equal to 2f1 nx implies f equal to nf1. Substituting the values of f and f1 from 1 and 3, we have p minus q by p plus q into g equal to n into minus p minus q plus m, p plus q minus m into g, or p square minus q square minus m into p minus q is equal to minus n p minus q p square minus q square plus nm p plus q, or n plus 1 into p plus n minus 1 into q into m equal to n plus 1 p square minus q square, or therefore m equal to n plus 1 p square minus q square by n plus 1 p plus n minus 1 into q. Two particles of masses m1 and m2. मैं तो अपन लेक्चर तैयार करूँगा, लेक्चर करने लग रहे हैं, चाहे लेने लग रहे हैं. Two particles of masses m1 and m2 are connected by a light inextensible string which passes over a smooth fixed pulley. If m1 greater than m2 and m1 descends with an acceleration f, show that the mass which must be taken from it so that it can ascend with the same acceleration is 4m1 fg by mf plus g whole square. In the first case, the acceleration of m1 in the downward direction is given by the standard result. In the second case, when mass m say is removed from m1, then its acceleration is in upward direction is m2 minus m1 minus m by m2 plus m1 minus m into g. To get the value of m in the required form, we eliminate m2 from 1. m1 plus m2 divided by m1 minus m2 equal to g by f 1 से. ठीक, applying component and dividendo, m2 by m1 equal to g minus f by g plus f from second f की value m2 plus m1 minus m2 plus m2 minus m1 plus m equal to g by f. First, second, ठीक, g by f. ठीक, applying component and dividendo, m2
m1 minus m equal to g plus f बटे g minus f डिवाइडिंग 3/4 3 को 4 से डिवाइड करो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो m3 डिवाइड बटे m1 माइनस m इक्वल टू g प्लस f बटे g माइनस f डिवाइडिंग 3/4 वी गेट m1 माइनस m बटे m1 g माइनस f का होल स्क्वायर बटे g प्लस f का होल स्क्वायर और m1 माइनस m इक्वल टू m1 g माइनस f का होल स्क्वायर बटे g प्लस f का होल स्क्वायर m इक्वल टू m1 1 माइनस g माइनस f का होल स्क्वायर बटे g प्लस f का होल स्क्वायर m1 4g 4fg बटे g प्लस f का होल स्क्वायर तो m इक्वल टू 4 m1 fg बटे f प्लस g का होल स्क्वायर mass of 4 kg is drawn across a rough horizontal table by means of a string passing over a smooth pulley fixed at an edge of the table and supports a mass of 2 kg at the other end. If the coefficient of friction be 5/16, find the acceleration of the mass. Let m1 2 kg, m2 4 kg, mu 5/16 f m1 माइनस म्यू m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू जी तो 2 माइनस 5/16 गुणा 4 2 प्लस 4 जी तो f इक्वल टू 1/8 जी m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ब्लॉक बी है ऑन स्मूथ टेबल इज टाइड टू ब्लॉक्स ए एंड सी ए और सी है the string which pass over frictionless pulleys on the opposite edges of the table as shown in figure this. If A B C weights 8 kg, A का वेट 8 है, B का 20 kg और C का 20 kg respectively, then the system is set in motion and the system is set in motion. Find the acceleration. Here the block B is tied to 2 strings. Let the tension in the 2 parts of the string be different and equal to T1 and T2 respectively. ये T1 है एक में एक T2 है. This is since the weight of block C is more than that of the block A, therefore block C descends ऊपर जाएगा. Block A ascends नीचे आएगा and the block B moves horizontally towards right की तरफ जाएगा. Let F be the common acceleration of the motion. The different forces acting on 3 blocks are shown in figure 5.15. Weight 20 kg downward, 8 kg downward, 20 kg downward, T1 tension पर T2 tension पर F acceleration इस साइड में ऊपर राइट में नीचे F राइट हैंड साइड को सरक गया T1 टेंशन लेफ्ट में T2 टेंशन राइट में है. The equation of motion of the block A is T1 minus 8 G equal to 8F. The equation of motion of block B is T2 minus T1 equal to 20F. The equation of motion of block C is 20G minus T2 equal to 20F. Adding 1, 2, 3, 1, 2 and 3. Add किया तो 20G minus 8G. 8 plus 20 plus 20F. तो F 12 G बटे 48 9.8 बटे 4 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. A string passing over a smooth table at right angle to 2 opposite edges is attached to it. At the ends, 2 masses M1 and M2 which hangs vertically. A particle of mass capital M is also attached to the portion of the string which is on the table. Show that the acceleration of the system is this. Find the tension of the string on either side of M. Equation of motion is T1 minus mg. T1 minus mg. Let M1F, M2G
minus T2 equal to M2F. T1 minus T2 is equal to MF. Adding the our equations, F M2 minus M1 but M1 plus M2 plus capital M into G. From 1 T1 equal to M1 G plus F. पुट करते वैल्यू G plus F की, M1 to M2 plus M1 plus M2 plus capital M into G. T2 M2G minus F. T1 निकल गया, T2. This is the exercise. You will do assignment. Thank you. If there is any problem, you can ask. You can view this lecture online on YouTube channel of college website www.bljscollege.com. Thank you. We will meet in the next lecture. Thank you.